नमस्कार. आडेक्स गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. शेनवारा देशाबरोबर राज्यान 17वो प्रजासत्ताक दीस दबाज्यान मनयलो. तिरंगो बावटो हुबोवन देशभक्तीच्या गीतांनी प्रजासत्ताक दीस रंगलो. आडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. खेरती अब आ रही है गोवा की झांकी. विषय अमन जहां पर कायम है, सर्वधर्म संभाव. चानयेच्या पिला तुका तीन पाट, येवकार दिता तुमका गोयची वाट. चानयेच्या पिला तुका तीन पाट, येवकार दिता तुमका गोयची वाट. A happy Republic Day to all my Indians, people across the world and people of Goa. आयच्या ह्या रिपब्लिकाच्या दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिताना आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आमी अपहेल्ड सगळे जाण करतात ते व्हॅल्यूज आमी दवरपाची आयज गरज आसा. आनी इक्वॅलिटी टू ऑल आमी सगळ्यांक मानपाक जाय. आनी 70 वर्सां जाली ह्या रिपब्लिकाक आनी आमचे रिपब्लीक प्राऊड आमी इंडियन्स म्हणूंक शकता की इट इज वन ऑफ द ओल्डस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट रिपब्लीक वीच इज सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड. आमचे इंडियेक सगळे आख्खो संवसार मानता कित्याक आमी कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड करून दवरलेलें आहा इतलीं वर्सां. 70 वर्सां जालीं आनी सगळे जाण एकवटान आनी इक्वल आमी मान दिता. रिलिजनाक आसूं कितेंच कॉन्स्टिट्यूशनान जे सगळे बरयलां ते आमी मानता म्हणून हे रिपब्लीक आयज बसून आमी सेलिब्रेट करता. वन्स अगेन हॅपी रिपब्लिक डे टू वन एंड ऑल. नेतृत्व में संचालन कर रहे हैं आर्मी प्लेटून is headed by Major Ravinder Kaur. A big round of applause, ladies and gentlemen, for the wonderful marching. Followed by Navy platoon, लेफ्टिनेंट अविनाश खन्ना के नेतृत्व में शिस्तबद्ध संचालन का परिचय देते हुए और उनके पीछे नौसेना की सशस्त्र प्लेटून लेफ्टिनेंट ऋषिकेश भस्मे के नेतृत्व में नेवी प्लेटून लेड बाय लेफ्टिनेंट मलजाव मुगाल गोयांकारानो 69 वर्ष पहले इस यादगार दिन पर हम भारत के लोगों ने सर्वसम्मति से भारत को एक संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और समानता सुरक्षित रखने का संकल्प लिया. आज के दिन हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने संविधान में निहित समृद्ध आदर्शों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ सके. आज हमें मानव और नैतिक मूल्यों पर स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व है, जिसने संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति और पंथ की विविधता के बावजूद लोगों को एक साथ बांध दिया है. मित्रों, आइए इस ऐतिहासिक दिन पर हम सब मिलकर हमारे देश के संविधान निर्माताओं के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों और कुर्बानियों को आदर के साथ याद करें. निमित्त आमचे ज्येष्ठ नेते ज्यांनी देशा खातीर आनी पक्षा खातीर खूब आपल्या जिवनांतलो वेळ दिलो. आमी भाग्यवान आसात की आज आमच्या गोंयांत ते ह्या 26 जानेवारीच्या प्रजासत्ताक दिनाक आज उपस्थित आशिल्ले. तांच्या उपस्थितीक आजचो प्रजासत्ताक दिन उमेदीन जालो.
सर्वे तुझे पक्षाचं पोलीस आणि विद्यार्थी संचलनाची हे platoon under the able command of Police Sub-Inspector Shri Sarvesh Sawant. We are here today to celebrate our great republic. 70 years ago, we were declared a sovereign republic. And it is for each one of us to ponder how much we have marched ahead, where our nation stands in the community of nations in the world. It is for us to judge how well we have worked under the Constitution given by Baba Saheb Ambedkar, under which we have functioned, whether at the center, whether in the states. We have seen so many successes. We have sometimes faced failures, but as a sum total, led by different governments, led by different prime ministers, led by different chief ministers, have we not been recognized as a progressive nation, as a developed country, as a nation marching forward? First of all, I want to give this credit to each one of you, to each one of the citizens of this state, to each citizen of this country, to make our democracy vibrant, to see that our democracy delivers, our democracy works with true principles as enshrined in the Constitution. I think with the pressure of the people of this country, even though literacy might not have been that high in the Esther years, I can safely say, being the third largest democracy, we have one of the best functional democratic country working, which the whole world appreciates.